Good morning, ma'am. Morning, class. Good Good morning. morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay. So the question that we were doing yesterday, just a minute. Hmm. I have to share my screen. Please inform your class that now I'm not allowing anyone to enter the class. I don't want any disturbance during the class. एक घंटे की क्लास में तुम 12:30 बजे तक आते रहते हो. This is not acceptable. So the question that we were doing yesterday was y square is equal to 4x minus 3, right? So this curve is something like this. That is, this point is 3, right? So what we were doing was I'm denying all, okay? So please inform your class on the class group. I will not allow after 12:05 since we started entering at 12:02, so I allowed till 12:07. So am I audible to all? Yes, ma'am. And Yes, is ma'am. Yes, the ma'am. screen Yes, is ma'am. visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. So we started with doing curve tracing, and we have seen some characteristics how to trace a curve. तो कर्व को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हमने देखा सिमेट्री, फिर हमने देखा ओरिजिन पे अगर कर्व पास कर रहा है नहीं कर रहा, और कितने टाइम्स वो कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, और ओरिजिन पे अगर एक बार पास कर रहा है तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, अगर दो बार पास कर रहा है तो उस केस में टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट है या रियल एंड कोइंसिडेंट है या रियल सॉरी या फिर इमेजिनरी है. ठीक है, तो उस बेसिस पे वी डिफाइन द ओरिजिन एज नोड, कस्प और आइसोलेटेड. ठीक है, तो नाउ वी वर डूइंग दिस. अगर हमारा कर्व ओरिजिन पे नहीं एक्सक्यूज है. मी मैम. हाँ जी. मैम कुछ स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं मिली मैम, वो कह रहे हैं मैम एक बार आप कंसिडर कर लेते मैम. नहीं, I will not consider. See, this is every time for the मैम class of. See, listen. For the class of 1 hour, you are entering till 12:30. That is not acceptable. क्या मैम 15 मिनट के मैं एंट्री देती रहूंगी? तो मुझे मैम ये बताओ. एक्चुअली मैम आज सर ने ना मैम लेट कर दिया था सबको मैम. 12:05 पे सर ने हमें क्लास क्विट करी है मैम, तो इस वजह से लेट हो गया मैम. आगे से नहीं होगा मैम. तो 12:05 पे क्विट करिए तो आई अलाउड टिल 12:07 एंड स्टूडेंट्स वर एंटरिंग एट 12:03-4. मैंने वो ऐसा तो नहीं है ना वो बच्चे क्लास में नहीं थे? मैम वो मैम रोल नंबर ले पैरेलली रहे थे ज्वाइन ना कर रहे मैम, थे। तो 1 से लेके जो जिनका जिनका अटेंडेंस होती जा रही थी वो लीव करते जा रहे थे मैम. मैम आप आज कंसिडर कर लीजिए मैम, आगे से हम टीच सर से बोल दिया करेंगे. उनको बोलिए एक साथ एंट्री करेंगे. अभी एक साथ बोलिए ग्रुप पे ओके जल्दी. मैम मैं बोल. तो we were doing when the curve is not passing through the origin like this. The equation is here when the curve is not passing through the origin. तो उस केस में हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो हमने ये देखा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो हमने इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो दैट केम आउट टू बी 3,0. Now what we have to do is we have to shift the origin from 0, 0 to 3, 0. So y will remain the same, y dash will remain the same as y, and we will define x dash as, एक second, we will define x dash as, और कोई नहीं आ रहा है अभी क्लास में? मैम मैंने मैसेज डाल दिया मैम, अब रहने दीजिए मैम. I should मैम not allow इनको तो now ले anyone. मैम इनको तो ले लीजिए मैम, मतलब मैंने सबको बोल दिया मैम. अभी कितनी देर में एंटर कर रहे हैं बच्चे? अब कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैम अब नहीं आ रहा है कोई मैम, मैंने बोल दिया मैम. ठीक है. So
x dash is defined as x minus 3. ठीक है? So now if I substitute these values in the equation, so this will become x क्या हो जाएगा? Small x will be equal to x dash plus 3. So this equation will become y square is equal to 4x dash, right? बेटा मैं किस किस को लूंगा मुझे ये बताओ अब। मैम अब आप मत लीजिए मैम, अगर आपको नहीं सही लग रहा है तो मैम। ठीक है, so this is now my equation of the curve at origin. You can simply or I should write it as y dash is equal to 4 y dash square is equal to 4, यहां पर क्या हो जाएगा? x की जगह आ जाएगा x dash plus 3 minus 3. So this will come out to be 4x dash. ठीक है, now how to find the equation of the curve at origin? Now this is your new curve at origin, right? How do you find the equation of the curve at origin? Ma'am, equation of curve or tangent? Sorry, equation of the tangent to the curve at origin. Ma'am, x dash equals to 0. x is equal to 0. This will come out to be x dash is equal to 0, right? So what is x dash? X dash is x minus 3. So substituting equals to back 3. the value, x minus 3 is equal to 0. So x is equal to so the tangent here is x is equal to 3. That is what we were trying to get yesterday, right? Is that clear? Yes, ma'am. यस मैम। तो अगर अभी हमने देखा था लास्ट क्लास में कि हमें अगर सबसे पहले हमने देखा था कि टैंजेंट अगर हमें फाइंड आउट करनी है किसी कर्व की एट ओरिजिन तो वो कैसे करते हैं? देन इफ द कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द कर्व इज इंटरसेक्टिंग either coordinate axis, sorry, it is intersecting either the coordinate axis or not, matlab if it is not passing through origin, then how to find the tangent to the curve at the points? So what we do is we shift the origin at the particular point जहां पर भी हम tangent find out करना चाहते हैं वहां पर हम पहले अपने कर्व को शिफ्ट करते हैं, सॉरी ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं और फिर वहां पर हम जैसे अभी हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया, अगर सपोज मेरा कर्व कुछ इस तरह से डिफाइंड है, यहाँ पर डिफाइंड है कर्व at this point is A and B. So in that case, how will I define my new origin at point AB? Y dash is equal to y minus B and x dash is equal to x minus A. Right? This is how I will define my new origin. और फिर ये सारी इन दोनों वैल्यूज को मैं पुराने जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके एंड देन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज. ठीक है? इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now moving ahead.
Now, one thing that we are going to do is very important. Okay, another one thing is if the curve is passing through, this is a very trivial thing after all this, but still I'm just for the sake of doing, I'm doing it. If the curve is passing through this line, if the curve is something like this, and I want to find this point of intersection of the curve with the axis y is equal to x, how will I do it? Ma'am, by putting y equals to x in the equation of the curve, we'll find the point of Right. intersection. Right. We will solve it for y is equal. We will substitute the value for y equal to x and then solve it. And similarly, we can do it for. We'll do it for y also. Y equal to minus x. Right? So this is how we can solve the equation. Now, next thing is, what is an asymptote? Tangent at infinity. Tangent at infinity, right? So you write down the definition of asymptotes. Asymptotes as such class, it is not in course, but आपको curve tracing अगर आप कर रहे हैं तो curve tracing करने के लिए you would have to do the you have to find out the asymptotes also. ठीक है? So you can write down the definition of asymptote. स्पेलिंग क्या होती है? Spelling of asymptote is एक सेकेंड. ASYMP TOTES. ASYMP TOTES. ठीक है? So you write down the definition of asymptotes. Asymptotes are basically, in simple language, asymptotes are the tangents at infinity. A point pxy, a point like pxy, a point pxy on an infinite branch of a curve, on an infinite branch of a curve, on an infinite branch of a curve is said to tend to infinity, is said to tend to infinity along the curve, is said to tend to infinity along the curve when either x or y, when either x or y or x and y, it's like x or y or x and y both tend to infinity or minus infinity. Both tend to infinity or minus infinity. Both tend to infinity or minus infinity as p moves along the infinite branch. As p moves along the infinite branch of the curve. So how to find the asymptote parallel to the axis to the curves?
So now we are going to see how to find the asymptotes. First thing that we are going to do is how to find the asymptotes parallel to axis to the curve. Then we are going to see how to find the asymptotes not parallel to the curves. Okay. So if we have a curve defined as y is equal to e raised to power x, how does this curve look like? How does this curve look like? Exponential. Right? This curve is y is equal to e raised to power x. So to find the asymptote parallel to the curves, parallel to the axis to the curve, what we do is we will write limit of, अगर हमें x एक्सिस के पैरेलल निकालना है तो हम लिखेंगे like this, limit of y x tending to infinity, and so this can be equal to limit of x tending to infinity e raised to power x. What is this equal to? Infinity. Infinity. And what is e raised to power minus x equal to? Sorry, just a minute. E raised to power x, limit of x tending to minus infinity. What is it equal to? 0. 0. 0. So the tangent, now you can see what is the asymptote here. The asymptote here is Y equal to 0. x is equal to 0. बट मैम एक्स एक्सिस की डेफिनेशन तो y इक्वल टू 0 होती है. सॉरी मैम एक्स एक्सिस होगा ना इसका एसिम्प्टोट. हाँ x एक्सिस है. तो मैम उसकी डेफिनेशन तो y इक्वल 0 होगी. राइट. y is equal to 0. It is y is equal to 0. मैम ये समझ कैसे हो गया, कैसे लिया? आपने किसकी लिमिट निकाली है? y की. y की लिमिट निकाली है. अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी था तो इंफिनिटी आई, और जब x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी था तो 0 आई. राइट. क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर तो आपका एसिम्प्टोट डिफाइन नहीं हो रहा है. ठीक है. इसी तरह से अगर आपको y एक्सिस के पैरेलल में लिमिट निकालनी है तो दिस विल कम आउट टू बी इंफिनिटी ओनली. अच्छा, अब आप प्लीज राइट डाउन द रूल्स फॉर फाइंडिंग. समझ में नहीं आया. अभी बेटा आप लिख तो लीजिए ना पहले. मुझे पता है ये समझ में नहीं आया. आप पहले रूल्स लिख लीजिए. मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था. अगर आप रूल्स लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लाइन इज रूल्स फॉर फाइंडिंग द एसिम्प्टोट्स. ठीक है. इज इट फाइन? यस To मैम. find the asymptotes parallel to y-axis, to find the asymptotes parallel to y-axis for the curve fxy equal to 0, it's like for the curve fxy to find the asymptotes parallel to y-axis for the curve fxy equal to 0, equate to 0 the coefficients of the highest power of y present in the equation of the curve. Equate to 0 the coefficient of the highest power of y present in the equation of the curve.
then resolve it into linear factors, then resolve it into linear factors, then these factors equated to zero, give the equations of the asymptotes, gives the equation of the asymptote. If the coefficient, please write down next line, if the coefficient of the highest power of y, if the coefficient of the highest power of y is either a constant, or not resolvable into linear factors, if the coefficient of the highest power of y is either a constant or not resolvable into linear factors, then there does not exist asymptotes parallel to y-axis. Then there does not exist asymptotes parallel to the y-axis. And similarly, you can do it for asymptotes parallel to x-axis. Okay? Similarly, you can do it for asymptotes parallel to x-axis. First, you do it for this one. Find the asymptotes parallel to the axis for the curve x square y square is equal to a square into x square plus y square. Find the asymptotes for this curve parallel to the axis. Find the asymptotes parallel to the x-axis and parallel to the y-axis for the curve x square y square is equal to a square into x square plus y square. Ma'am, for equation of asymptotes parallel to y-axis are x equals to plus minus a, and for x-axis it is y equals to plus minus a. Right. मैम सिर्फ ये आ रहा है प्लस माइनस तो नहीं आ रहा। प्लस माइनस ए क्यों नहीं आएगा बेटा? यहाँ पर क्या है? अगर आपको एक्स स्क्वायर के लिए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया ठीक है मैम, वो गलत लिख दिया था। वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट? ठीक है? So these are the asymptotes parallel to your y-axis. अब जो आपका पहला इक्वेशन था y is equal to e raised to power x, ठीक है? अब इसके अंदर अगर आपको इक्वेशन बनानी है y माइनस e raised to power x is equal to 0. So what is the highest, if you want to find the asymptotes parallel to y-axis, what is the coefficient here? It is 1. What is the highest power of y? 1. और उसका coefficient क्या है? Is a constant, that is 1. That is 1. So there does not exist a asymptote parallel to y-axis. Right?
Is that fine? Yes, ma'am. Yes, इसीलिए ma'am. मैंने कहा था कि Yes, एक बार ma'am. रुक जाओ, let us write the rule and then we do it. Okay. So next characteristic is, please mute yourself. मैम तो फिर इसमें x इक्वल टू 0 कैसे है मैम? x का भी तो मतलब x के साथ भी तो वन ही है उसकी कोएफिशिएंट e की पावर x में। एक सेकेंड बेटा, मैंने कहा था x की पावर, x यहाँ पर x खुद पावर में है, तो यहाँ पर हम इसको उस तरीके से सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, e रेज़ टू पावर x, और हमने फिर इसको इस तरह से लिखा है। अच्छा मैम समझ गया। ठीक है, यहाँ पर x खुद पावर में है, x की पावर डिफाइंड नहीं है। So next characteristic is regions in which the curve does not exist. जैसे अब ये वाला कर्व है आपका y is equal to e raised to power x. In which regions this curve is not defined? y less than 0. Y less than 0, this curve is not defined, right? Similarly, y square is equal to 4x. In which regions this curve is not defined? X less than 0. X less than 0. So this curve is not defined here. How did we find that this curve is not defined in the x less than 0? If we take the under root of this, what we get is 2 of, Imaginary. sorry, imaginary 2xi. ठीक है? Is that fine? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. this is how, if the curve, अगर हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किसी भी एक वैल्यू के लिए या y की वैल्यू के लिए या x की वैल्यू के लिए, अगर हम अपने कर्व को सॉल्व करते हैं और उसके अंदर हम ये देखते हैं that this curve is not defined or it is imaginary in some particular section of the Cartesian system, then we say that the curve does not exist in that particular part. Let us take one more example. Y square is equal to x cube upon में 1 minus x. So where does this curve exist and where does this curve does not exist? X less than 0, it does not exist. Yes, for x less than 0, this curve does not exist. And मतलब अगर हमारा ये कार्टेशियन सिस्टम है तो इस पार्ट में तो ये कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है, और कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है? X equals to 1. Greater than 1. Sorry, x equal to 1. X greater than 1. Right. And this curve does not exist here. The curve exists here in only in this region. The curve is defined only in this region. ठीक है, तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं कि किस रीजन में कर्व एग्जिस्ट करता है और किस रीजन में कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है. So to obtain such a region, please write down, to obtain such a region where the curve does not exist, to obtain such a region where the curve does not exist, solve the given equation for one variable, solve the given equation for one variable in terms of the other. Solve the equation solve the equation for one variable in terms of the other, and find the set of values of one variable which make the other one imaginary or undefined. So we try to find out, sorry, what you Value. find the set of values of one variable which make the other one imaginary or undefined. ठीक है? Next thing is sign of first derivative, sign of dy by dx, sign of dy by dx, sign of dy by dx.
Find the points on the curve. Find the points on the curve where dy by dx is equal to 0 or infinity. Find the points of the curve where dy by dx is equal to 0 or infinity. Find the points on the curve where dy by dx is equal to 0 or infinity. That is the points where the tangents are parallel to x-axis. That is the points where the tangents are parallel to the x-axis or perpendicular to the x-axis. पैरेलल कब होगा एक्स एक्सिस के, जब dy by dx 0 होगा या इंफिनिटी होगा? dy by dx equals to 0. Right. So the tangents are parallel to the x-axis when dy by dx is equal to 0, and when the tangents are perpendicular to the x-axis, in that case dy by dx is equal to infinity. ठीक है? Also find the intervals when dy by dx is greater than 0. In that case, the curve is increasing curve. In that case, the curve is increasing curve. Also find the intervals when dy by dx is less than 0. In that case, the curve is a decreasing curve. In that case, in that case, the curve is a decreasing curve. मतलब अगर आपका dy by dx greater than 0 है या less than 0 है, तो इस केस में आपका increasing curve होगा और इस केस में आपका decreasing curve होगा. मैम dy by dx और dy square by dx square. dy by dx पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकालने को कह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि dy by dx अगर आपको ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उस केस में आपका इंक्रीजिंग कर्व होगा, और अगर आपका लेस देन 0 आ रहा है तो उस केस में आपका डिक्रीजिंग कर्व होगा. आई एम नॉट आस्किंग यू टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो आप तब कर सकते हो जब आप d2y by dx2 को इक्वल टू 0 पुट करोगे. सॉरी, हाँ, जब आपकी वैल्यूज जब उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड आउट करोगे वो लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है. ठीक है? ओके मैम. So now let's go upon to trace a curve. ठीक है, एक कर्व को ट्रेस करके देखते हैं कि कैसे हम कर्व ट्रेस कर पाते हैं. So trace the curve. The question is trace the curve y square into x plus a is equal to x square into 3a minus x. Trace the curve y square into x plus a is equal to 3a minus x. ठीक है? This curve can also be written as, if I simplify this curve, then it can be written as y square x plus a y square minus 3a x square plus x cube is equal to 0, right? What was the first point to trace the curve? Symmetric. You tell me, is it symmetric about y-axis? Yes, ma'am. Possibility is there. What do you mean by possibility is there? Please check that possibility. Yes, sir. Yes, Yes, ma'am, ma'am. it is symmetric. Are you sure that it is symmetric about y-axis? How do you check for symmetric about y-axis?
from x-axis. Please check your notes once again and tell me if the curve is symmetric about x-axis or not. Yes, ma'am, x-axis. No, ma'am. X-axis is symmetric. So it is symmetric about x-axis but not about y-axis. It Yes, is ma'am. not symmetric about it is symmetric about x-axis, but it is not symmetric about y-axis. Is it symmetric about y equal to x? No, ma'am. No, ma'am. It is symmetric about x-axis. This is the first point. So the curve जो है आपका यहाँ पे आप जो curve draw करोगे, it is symmetric about x-axis. ठीक है? So does the curve passes through the origin? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what are the Yes, ma'am. tangents at origin? What are the tangents at origin? Ma'am, ay square equals to 3ax square. That is y square equals to Plus 3x minus square. root 3x. Plus minus root Plus 3x. minus root 3x. Y is equal to Plus Plus minus mi- 3. plus Root minus 3x. root 3x. 3x. right? तो इस tangent को आप कैसे draw कर सकते हैं? Drawing is very difficult here. I mean, this is mostly looking like y is equal to x plus you take it, but you please take it as y is equal to plus minus root 3x. So these are your tangents. ठीक है? This is your y is equal to root 3x and this is your y is equal to minus root 3x. ठीक है? यही आ रही है? उसके Yes, ma'am. बाद does the curve intersect the coordinate axis? Does the curve intersect at coordinate axis? Which coordinate axis it intersects? जल्दी से बताओ बेटा. X is equals to 3a. Yes, x is equal to it intersects the curve at it intersects the Cartesian system at 3a comma 0. So we can find the tangent at 3a comma 0. What is the tangent at 3a comma 0? What is the tangent at 3a comma 0? What is the tangent at 3a comma 0? जल्दी से बेटा. What is the tangent at 3a comma 0? डिस्कनेक्ट हो गया है क्या?
Are we all here? Yes, ma'am. Yes. So what is the tangent at 3a, 0? कैसे निकालेंगे? Origin shift किया? मैम एक मिनट कैलकुलेट. Ma'am, just a minute. Okay. मैम x इज इक्वल टू 3a ही आ रही है. हाँ. So the tangent here is x is equal to 3a. So the tangent here we can define something like, find the asymptotes parallel to x-axis and y-axis. Find the asymptotes parallel to x-axis and y-axis. Ma'am, for y-axis, it is x equals to minus a. Right. Asymptote क्या आ रही है हमारी? X is equal to minus a. So the asymptote here is something. अगर ये हमारा minus a है, please avoid this bad drawing. Ma'am, and for parallel to x-axis, it is not possible. Yes, there does not exist a asymptote parallel to x-axis. ठीक है? So now the curve is symmetric about what is the sign of dy by dx? Is it possible to find here? Okay, before that, which are the regions where the curve does not exist? Which are the regions where the curve does not exist? Ma'am, x more than 3a. And so the curve does not exist here. जो इसकी ये tangent है, इसके beyond curve नहीं है. So the curve is something like this. ठीक है? So the curve is something like this. और फिर ये इसके tangents हैं, तो ये यूं आ रहा है. So the curve is not going beyond here. ठीक है? And the curve then will, as these are the asymptotes, so the curve will go something like this. So the curve that you will have finally is this is something like ठीक है, where this point is 3a, 0. So the curve is intersecting here. This is your tangent here, and this is your asymptote here at x equal to minus a. मैम अभी हमें ये कैसे पता लगा कि जो एसिम्प्टोट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी आएगी, नेगेटिव वाई एक्सिस में भी आएगी? आपने एसिम्प्टोट क्या निकाली है? x इज इक्वल टू माइनस ए आई थी. हाँ, तो x इज इक्वल टू माइनस ए क्या होती है? नहीं मतलब मैम ये भी तो हो सकता है ना कि ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट ना कर रहा हो या नीचे एग्जिस्ट ना कर रहा हो. मतलब हमने कैसे कंक्लूड किया कि दोनों तरफ आ रहा है? दोनों तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके यहाँ पर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है कर्व के. और थोड़ा सा इसको शेप देने के लिए the other thing that you can do is that you can find out some points at these positions.
इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, मतलब आप हर डायरेक्शन में कुछ कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से भी आप वैल्यूज को कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, मैम एक बार ये फिगर दोबारा समझा दोगे? हाँ हाँ, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक सेकेंड बेटा। व्हाट आई सेड वाज, आपने ये सारी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करे इस कर्व के। These are the characteristics that you have find out. आपने बोला इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो जैसा ऊपर दिखेगा वैसा ही ये नीचे दिखेगा। तो आपने मुझसे पूछा कि ये अगर ऊपर जा रहा है तो हमें कैसे पता कि ये नीचे भी जाएगा। तो अभी हमने बोला कि अगर ये सिमेट्रिक है तो ये ऊपर जाएगा तो नीचे भी वैसा ही जाएगा। ठीक है, एंड वी सेड दैट इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, रादर इट पासेस थ्रू द ओरिजिन ट्वाइस। आफ्टर दैट तो उसकी टैंजेंट्स कैसी होंगी, टैंजेंट्स हमने ये निकाले हैं। ठीक है, टैंजेंट्स निकालने के बाद हमने बोला कि भाई ये उसके अलावा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये y एक्सिस पे तो कहीं इंटरसेक्ट करता नहीं है, ये सिर्फ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट 3a, 0। उसके अलावा इफ इट इंटरसेक्ट्स एट द दिस पॉइंट देन व्हाट इज द tangent here? The tangent here came out to be x is equal to 3a, and the curve is not defined in this area and the curve is not defined in this area. So the curve is defined between the asymptote and the tangent. Asymptote x is equal to minus a जो आपने find out किया, and the tangent at x equal to 3a. The curve is defined between that. तो अगर हम x के ऊपर वाला curve draw कर लेते हैं तो नीचे वाला तो अपने आप ही curve draw हो जाएगा because it is symmetric. Yes, तो ma'am. अगर हम यहाँ पर एक दो पॉइंट्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि वो की शेप, जस्ट टू फाइंड आउट द शेप ऑफ द कर्व, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब शेप फाइंड आउट करेंगे। तो शेप फाइंड आउट करने में आपको जब dy बाय dx निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि शेप इज कमिंग आउट टू बी डिक्रीजिंग। ठीक है, और फिर वो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर आप शेप निकालेंगे कि यहाँ पर जो dy बाय dx निकाला तो वो क्या है आपका इंक्रीजिंग। सो दिस इज हाउ इट इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस, and then here it is coming out of since it is an asymptote here, so it will come out to be like this. So the tangents at the infinity. Is it fine? Yes, ma'am. Thank you. So we can do one more question. uh, we can do this question next time. Is that fine? Yes, ma'am. We can do one question next time, and next time I will take your doubts also. That is on today's Tuesday or Yes, Today's ma'am. Wednesday. right. So I'll take the doubts and your questions, this question on curve tracing next time. मैम फ्राइडे Ma'am, को I'm तो हॉलीडे है facing ना one मैम? problem. Sorry, फ्राइडे को क्या है? मैम 1 जन है, हॉलीडे होगी ना मैम? नहीं, क्यों होगी हॉलीडे? मैम हॉलीडे नहीं होती है। नहीं, कोई हॉलीडे नहीं होती है। 1 जन किस चीज की हॉलीडे है? मैम 1 जन को हॉलीडे नहीं होगी? नहीं, क्यों होगी हॉलीडे? New Year. मैम न्यू ईयर मैम आप की न्यू ईयर हॉलीडे नहीं होती, मतलब लीव होती है न्यू ईयर की। We all are Indians. Indians के अकॉर्डिंग what is the न्यू ईयर? अप्रैल में होता है मैम। वही मैं बोल रही हूँ ना। तो मैम न्यू पर ईयर मैम मेरे लिए तो नॉर्मल डे है। इट इज अ नॉर्मल डे फॉर मी। अप्रैल में छुट्टी मिलेगी। हाँ, अप्रैल में छुट्टी मिलेगी। पहला नवरात्रा इज द न्यू ईयर। मैम क्रिसमस की तो मिली थी हमको। क्रिसमस की मिली थी ना, वो गस्टेड हॉलीडे है। 1 जनवरी इज नॉट अ गस्टेड हॉलीडे। अच्छा मैम आप लीव नहीं देंगी मैम? मैं क्यों दूंगी लीव? मैम कॉलेज रिक्वेस्ट देगा है ना, मैम। मेरे हाथ में थोड़ी ना है। मैम आप दे दीजिए अगर हो पाए तो। नहीं, मैम आई विल रिक्वेस्ट नॉट। है व्हाई शुड मैम। आई गिव? व्हाई शुड आई गिव? अगर कोई नहीं आया क्लास, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, इफ यू बंक अ क्लास आई विल मार्क यू ऑल एब्सेंट, फर्स्ट थिंग। Second thing, whatever I am supposed to do in that class, I will not repeat. I will miss the content, assuming that you will do it by yourself.
And you please take it very seriously. I'm very strict on this part. Excuse me, ma'am. हाँ जी. मैम फेसिंग वन प्रॉब्लम. मैम एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ प्रूविंग है जिसमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है. मैम तो वो प्रूविंग्स ना मुझसे हो नहीं रही है, मतलब तो कैन आई सेंड यू द क्वेश्चंस? Okay, you can share the question. Ma'am, shall I make? Did you try doing it using that formula that we did? I forgot the name. जो product के लिए करते हैं. Leibniz rule. Yes, ma'am. Ma'am, I tried that, but I'm not getting the answer. Okay, it's okay. You can share the question. Okay, ma'am. Just a minute. On that group only. On that group only. जो आपने doubts के लिए group create किया है, on that group you can share the question. Secondly, Okay, I hope you all have received the assignment. Please submit it by Wednesday, next Wednesday, रात को 12 बजे तक आप सबमिट कर देंगे. You have to submit in the hard copy पे लिखकर उसको स्कैन करके डालेंगे. और अगर आपको ये लगता है कि आप अपने फ्रेंड का हार्ड कॉपी ले लेंगे और उसको स्कैन करके डाल देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एवरी शीट शुड कंटेन योर नेम एंड रोल नंबर. इज दैट फाइन? Yes, ma'am. So every sheet should contain your name and roll number. Every sheet of the assignment, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, एक ही शीट का, it should contain the name and roll number of the student. ठीक है? और उसको आप स्कैन करके हैंड रिटन असाइनमेंट होना चाहिए. हैंड रिटन करने के बाद every sheet should contain front and back both sides the name and roll number, and then you will scan it and then you will post it on the group in the PDF format. Is that fine? यस मैम. मैम अगर असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई हम आपसे नहीं पूछ सकते ना इसका? नहीं. ठीक है? You have to do the assignment by yourself. You can discuss it in the class. मैम अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम वो मिस करके जो आते हैं वो तो कर सकते हैं ना? Right. Okay, मैम. Is that fine? I'm ending the class now. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.